Das not so good. So good. Shinchan Roy. Like 5-7 minutes wait करते हैं फिर like we'll start. Yeah. Let everyone join. ठीक. या तो like कुछ किसी को पहले like बोलना है, किसी को कुछ बात करनी है तो like chat में लिख दो या माइक खोल के बोल सकते हो. कर लो guys, interact. once in a while ही मिलता है भाई सीनियर से, like ऑनलाइन में ऐसे ही होगा इंटरेक्शन. Yeah, like यहाँ पे like हम सेकंड ईयर्स भी हैं एंड like फोर्थ ईयर्स भी हैं, यहाँ पर थर्ड ईयर्स भी हैं इस समय. Is it streaming on YT? Like I'll give you an update on that. I have to confirm it. It's streaming. सीधा Streaming? stream हो रहा है. हाँ right. Yeah. YouTube पे है यार. I guess 6-10 तक वेट करते हैं फिर. Like तब तक आ जाएंगे मोस्टली. yeah. Okay. यार like कॉलेज का लेक्चर नहीं है तुम्हारा, ये तुम बोल सकते हैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं बोलेंगे. तो हम भी तुम्हारे उसमें जा लाइक हम रह चुके हैं. तुम्हारा क्या ऑनलाइन क्लासेस का हमें पता है बहुत बोरिंग होती है, लेकिन यहाँ तुम लाइक बोल सकते हो यार हम कुछ नहीं करेंगे, इंटरेक्ट करने ही आए हैं.
अबे फिर तू लाइक स्ट्रीम प्रेजेंट स्टार्ट कर दे, फर्स्ट I स्लाइड पे छोड़ think दे। I'll begin because why should others suffer joined on time? हाँ लाइक 2 मिनट्स और वेट करते हैं। Yeah, at 5 6, 5, 6, 5. हाँ Fine. एंड विल स्टार्ट। तो बस प्रेजेंट करके यार लाइक रख दे। Yeah, because it will play automatically. So I'll हाँ present. हाँ Yeah. लाइक थोड़ा लाइक वॉइस बंद करनी है, वॉइस बंद कर लियो। लाइक कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पर। लाइक हम ऑडिबल है ना यार सबको, लाइक एटलीस्ट कुछ इनपुट दे दो, वहाँ पे भी कंफर्म हो। हेलो, हाँ भैया ऑडिबल हो आप? हाँ भैया ऑडिबल हो आप? थैंक यू यार। Thanks, man. So I guess I'll begin now. किसी ने चैट में लिखा है कॉलेज खुलने के चांसेस हैं क्या करें? Yeah, we are not in the administration, you see, so we can't come. हम भी डिलेमा में चल रहे हैं, हम बहुत कंफ्यूज हैं। Greetings, everyone. Today, I, Abhay Setia, along with my colleagues Siddharpreet Singh and Dhruv Talan, will conduct this session on circuit design. So, first of all, I think we should introduce ourselves. I am a student of electronics and communications engineering. Siddharth and Dhruv, on the other hand, belong to the electrical stream, electrical engineering. All of us are second year students here at Delhi Technological University. So before diving right into it, I would like to familiarize all of you with the aims that we have today. So first of all, it is to familiarize first year students with the fundamentals of circuit design. And second, to create awareness about the various applications of electronics. Moving ahead, so we have structured this session here into three components. First one is related to analog electronics and the application circuit design. MOSFETs in the field of circuit design. Next, we slowly transition into the digital domain, that is digital electronics, in which we'll talk about how to model and understand various logic gate functions. The interesting part here is that we model them using certain concepts that we learn in the analog electronics part. And of course, last but not the least, we have an extremely exciting Kahoot quiz at the end of which we'll be distributing extremely exciting prizes. So all of you should remain hooked onto this session. And trust me, it's going to be very nice. And let me assure you that this is not just another theory class, it's more of an application-based learning where we have real-life projects as well. So let's begin finally. Also, Abhay, I'd like to add, like, is there anyone here who doesn't understand Hindi? Like, Yeah, is there an issue for the language? Like, it would be really helpful if you can reply to me in the chat or like open your mic and tell me. Any international student? Are there any international students here? Then I don't think so. There are. Like, continue, Abhay, then. Okay. Okay, fine. So first, let's begin with the first part. So first, I think we should all revisit certain fundamentals of electrostatics that we all of us studied in class 12th while preparing for our board or JE exams. So as most of you might have guessed correctly here, what we have here is a capacitor. But it is not the classical case that we always study, where we have two conductive plates.
Here what we have is, on the top we have a conductive plate, like in the normal case, and on the other end we have a p-type semiconductor, and between them we have a layer of insulator. So you'll see in a minute where are we going with this. So just a quick recap, you have to keep in mind that the charge on the capacitor is equal to the capacitance into the voltage applied. Next, that the capacitance is inversely proportional to the thickness of the layer that is present. So here what do we see? When we are applying the voltage across the above and below, so charge gets accumulated on both the sides. Hence, we obtain a certain concentration of electrons on the upper end of the p-type substrate we have here. Now, this is interesting and we can exploit this. How we can do that? So we apply a voltage V2 across the other two ends of the p-type silicon semiconductor that we have. So there is a pathway of electrons present and we are applying a voltage. Hence, there will be a current flow. Now, just to revert back, how can we increase this? Of course, we can increase V2, but there is also another way, which is when we increase V1, the charge accumulated on the upper end of the semiconductor increases. Hence, we have an extremely interesting case here where we have a voltage dependent current source. This has a myriad applications in the field of circuit design, which all of you will study in the future. Now, after we have obtained a voltage dependent current source, we'll make certain modifications to it, as this is not the ideal case that we actually implement. As you can see, the terminals are spread in all directions. So we modify it in such a way that it's slimmer, sleeker, and we can access all the terminals from one side. So after modifying this structure, what we obtain is called a MOSFET, in which the upper layer, the upper conductive plate layer is now the gate, and the two side terminals of the p-type layer are replaced by two small n-type regions, which are called drain and source respectively. There is no on in the broad sense, it's a symmetric device, so there is no particular way you can point out. But for when we apply a current in a particular direction, we automatically assume that one is the source and the other is the drain. So again, here, as you can see, we have a p-type layer, so it's not like it creates the same amount of charge at all voltage levels. I hope all of you are with me so far, as the theory, it increases exponentially. So when we apply a voltage at the gate, like in the previous case at the upper layer, it has to be above a certain threshold voltage so that the device turns on and a certain required number of charges accumulated. And finally, when we apply voltage at the D end, that is the drain, like in previous case, we can utilize the channel that has been created to create a current flow in the opposite direction, which is the conventional current that we take, There is a certain direction in which the electrons are flowing, and there is a certain direction in which the current is flowing. Now, a question might arise, is this the only way to construct such a structure? The answer is clearly no. There are many different types of such MOSFETs. So MOSFETs are basically, now, since you have familiarized yourself with the theory, I'll tell you the full form as well. It is the metal oxide silicon field effect transistor. As you can see, it's a slightly simple structure. There's no need to be intimidated by the length of the term MOSFET. So the electronic counterpart of this, another way we can obtain such a case in which we have a voltage dependent current sources, we simply negate everything. That is, we have a mirror image of this case. What we have here is an n-type substrate, and we at the ends we don't have a n source region, we have a p-type source region. The previous one, since the main substrate was p-type, the ends were n-type, it was called NMOS. And in this case, since the ends are p-type, it is referred to as PMOS. I hope all of you are with me so far. Now moving ahead.
Now, there are various applications of this device in the field of circuit design. First, it is used in radio frequency applications where, because it has the property to handle high frequency radio inputs properly. Next, it can be used as a passive element. That is, it can be used to act as an inductor, resistor, or capacitor. Resistor, of course, is the basic element which we all study when we begin our journey of electronics. Inductor and capacitor, again, we have all studied this. Inductor is initially an open circuit when we apply a voltage as it resists change in the magnetic flux across the coil. And later it is a short circuit. On the other hand, a capacitor displays the extremely opposite set of properties. Next, we have an amplifier. In which it offers a good voltage gain. What do we mean by voltage gain? This is a term that you'll repeatedly hear later as your studies progress. So voltage gain is basically the ratio of the output voltage to the input voltage. Next, in digital IC circuits, due to the good switching property, as I told you earlier, you have to apply a voltage above a certain threshold in order to switch on the device. This might give you an idea that the device operates in one sweet region above or below a certain voltage level. Thus, it turns on and off depending on the voltage applied. This gives it a certain switching property. It is not the typical case that we have in like class 10th or 12th where we have that key switches. And last but not the least, in DC motor regulation. So this is extremely popular. Again, it is used in majority of the German automobile companies as well. Although now we have different configurations, but the configurations may vary from case to case. So now we have a project demonstration regarding this particular application as well, that is DC motor regulation. Let me run the circuit for you. So this is one of the projects I presented for my midterm evaluation as well. Now first we should see what all components do we have here. So as I told you about the PMOS, which is the electronic counterpart of the NMOS, so we have utilized the PMOS here. Next, we have a certain set of capacitors. Thus, you can guess that there is a certain charging and discharging process that is involved. Then we have diodes. So diodes, basically, as you know, we have to apply current in a certain direction, then only it flows. If it is applied in the opposite direction, it does not flow. Then we have a potentiometer, as you might have used it in class 12. We have an integrated circuit 555. And finally, we have the DC motor across which we'll apply this voltage that we eventually generate. So what is happening here? Let me explain it to you. The foundation of the working of this circuit is laid on the basic concept of charging and discharging of a capacitor. Initially, the trigger pin, the TRI pin, which you see on that board type device there, is at the lower logic position. Excuse me, Abhay. Someone is asking a question. So Gitanj Mehta asks, so can we use this as an oscillatory switch? Yeah. An oscillatory. So Gitanj, can you like open Can your? you elaborate a bit? Can you elaborate a bit more? Like when you showed the graph goes up and down. So I was thinking if that's applied on a real motor, it would be switching its direction after a certain time period. No, actually, let me explain first. Here, what we are, I think you're getting to the right point, but I think there is another way to explain. Let me first explain, then of course I'll take your doubts. So basically, as I mentioned earlier, let me begin again because it is a slightly complex process that is involved here. So as I said earlier, the foundation of the working of the circuit is laid on the basic concept of charging and discharging of a capacitor. Initially, the trigger, that is the TRI pin that you see on the board, is at the lower logic position since the capacitor C1 is not charged. These
conditions initiate the oscillation cycle here, making the output change to a higher logic position. By output, I mean the out pin that you see on that board. This higher level of output forces the capacitor to charge via diode D2. Now, when this happens, as the capacitor begins charging from zero, when it crosses 2/3 of the supplied voltage level, here we have applied a voltage of 9 volts, you can see. Here we have a voltage source of 9 volts. So as it crosses 2/3 of that, that is 6 volts, of the amount supplied, the threshold pin, the THR pin is triggered, and it causes the output pin, which I mentioned earlier, and the DIS pins to be reverted to a lower logic position. So as you can see, it is operating within a particular range only. Now, what are we achieving through this process? What we want to achieve is to generate pulse width modulation, which are variable width pulses and represent the amplitude of an analog input signal. The output switching transistor is on most of the time for a high amplitude signal, while on the other hand is off most of the time for a low amplitude signal. The fully on or off digital nature of the pulse width modulation circuit is less costly to fabricate than an analog circuit. Thus, yeah, you can see it increases the financial feasibility of the task we're about to undertake, which does not drift over a period of time. Now, coming back to the working, last I mentioned again that as the threshold pin is triggered when it reaches 6 volts, the out and the DIS pins are reverted to a lower logic position. Now, the out being at a lower logic position initiates the discharging of the capacitor. Thus, you can see as it crosses 2/3, it is made to decline after that via diode D1. This again takes place till a particular threshold is reached, that is 1/3 of the supply voltage. In our particular case, that is 3 volts. Now, as it goes below that, again the same set of pins are triggered. That is the out and the DIS pins on the board, and they are reverted to a higher logic position. This continuously takes place, and the cycle of discharging and charging continues. As you can see, the voltage level is increasing and decreasing continuously over a period of time. Thus, this generates pulses. Like these pulses are not exactly the sinusoidal shape which you see, which is the most popular, but you can see this is another type of wave which we are generating that is between certain levels. These pulses are fed to the gate of the MOSFET. Now, how does the MOSFET figure out in all of this? So basically, since these pulses, as you can see here on the graph, the purple line which we see here, it is 9 volts for a very short amount of time, hardly I think some milliseconds or something. So what we observe here is that we are applying the voltage to the MOSFET, it processes it, and it provides a certain, as I mentioned earlier, it is made to act as a resistor in this case. MOSFETs can act as a passive element. Excuse me, Abhay. Yeah. Like there's another question. Yeah. By Shinchan Roy. Yeah, what is the question? It says, I want to ask in electronics, do we just use the miniaturized resistor, inductor, and capacitor, or do we also have to do all those electrostatic stuff to create large resistors, capacitors, and inductors? Electrostatics primarily refers to certain processes that the electrons undergo while they are in a field or something like that. He's basically asking कि like बड़े resistors, capacitors and बेसिकली मैक्रो स्केल पे बना सकते हैं हम. हाँ कि like हमारे को बिल्कुल घुसना पड़ेगा and stuff करना पड़ेगा solve, या like we can use the miniaturized resistors to like create them. Yeah, we can definitely use different types of resistors. Regarding if he is worried about the mathematical part of it, then we have different circuit analysis techniques at the macro level. So we don't have to go right into the nuances of it. Like later, eventually what he'll study is a subject called circuit analysis. So in which, for example, in this circuit, we have resistors, we have a capacitor.
So how do we analyze these complex configurations? There are certain methods to it, and he'll find it extremely interesting that we can represent this whole circuit through a simple mathematical expression in which we have an uh, two or one quadratic equation upon another quadratic equation. So And that yeah, and like all of you have the subject in the first year, basic electrical Yeah, engineering. Like we this all would be discussed there. yeah, I mean, electrostatics Electrostatics is yeah. does not involve devices as such. That is regarding the behavior of the electrons. So that is at a very micro level. This is at the macro level of this. Now moving ahead with that. Now since we have fed these pulses to the MOSFET, which is acting as a good resistive device here. So what is happening? Because we are feeding the pulses to this device, it generates the same amount of energy as a good resistor. Sorry, it gives us the good resistive effect of a normal resistor without dissipating the same amount of energy. As most of you might have attended different sessions before this as well. For example, we are running an algorithm. So there is one method which requires certain number of seconds to run, and there is one method which requires certain number of seconds to run. So that method is more valuable to us, which requires less time. Here in circuit design, of course, time is of the value as well, but energy is also extremely valuable. So the MOSFET here in this case, as it is being fed pulses, removes the harmful heating effects. All of you might have studied the Joule heating concept in class. So basically, we are removing the harmful effects of Joule heating here, and we are preserving energy that is extremely valuable to us in this case. Now, what happens to the motor finally? So as you might have studied in rotational mechanics, there is an angular equivalent of every linear property. You have linear velocity and then you have angular velocity. You have a force and then you have angular force, which is basically torque. So the torque, the torque of the rotating component in this motor is proportional to the current. So due to the resistive properties being displayed by the MOSFET here, we are controlling the current. As you can see, I've inserted a probe here, and this current is being regulated here in the graph, in the interactive graph, which you can see. So this reduces the torque of the motor, and hence it operates at a certain optimum level that we require and does not increase too much. So that is how we have preserved energy and regulated the motor without simply applying a resistance in the circuit. So that is all from my side. Now my partner Dhruv will take over and build on the following concepts that I have introduced. Before those starts, I hope that like अभी तक सब कुछ समझ Yeah, आया and है of and course your yeah. doubts are always welcome. like अगर किसी को भी doubt है, you can ask here and like Abhay would be happy to explain it again. Yeah, definitely. As this is a slightly difficult concept. Like you can say stuff here like तुम्हारे online lectures नहीं है ये, like जो पूछना पूछ लो यहाँ पर, there's no problem. Yeah, you can write in chat as well as speak, whatever. No one's replying, then we'll take that everything is clear. Yeah, I think we should continue with this. Should we continue? All right. So Okay, Dhruv, now then. your part. Yeah. So yes, guys, as explained by Abhay in a wonderful manner, it's too exciting to see your doubts. Now let's move on to IC 5555. I am just taking on from the part where Abhay just has left off. In his project, there you see a component known as IC 5555. Basically, I am taking you guys into that topic and deeping dive into it. IC 5555 is basically nothing is an important integrated circuit, and it has many important applications. When you will explore the core subjects and study more about it, you will come to know about different things like frequency division, time delays, alarm generations, and tone, etc. That is basically done by IC 5555 because it is the heart of them. So yeah, I just said IC 5555 is an important integrated circuit.
So you may be thinking, what is an integrated circuit? Basically, in layman terms, integrated circuit is a circuit which is combining thousands of different components like resistor, capacitors, transistors on a silicon chip, and this is popularly known as an IC, basically an integrated circuit. So you all have studied about resistor, capacitors, right? And transistors too. But let's have a look at the transistors, because it's the most important and key thing that you must understand in electrical as well as electronics. After that, we will be exploring further areas with current knowledge and will be extending our horizon of knowledge. So yeah, let's move on. So as I said, transistor, you may know a little about transistor, but not that much. So let's extend that knowledge a little bit. Transistor basically, you think it is of two types, BJT and FET. Basically, we are concerned with BJT in this session as it is the scope. BJT is basically BJT is basically of two types, NPN and PNP. And before that, we must understand that BJT consists of three parts: emitter, base, as well as a collector. So yeah, just a bit. I'm just on charger on color. Yeah. So basically, transistor consists of two parts, BJT and FET, and BJT is of two types, NPN and PNP. BJT में तीन पार्ट्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर. अब जैसे तुमने डायोड्स का पढ़ा होगा, बेसिकली एन एंड पी साइड, पीएन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, वैसे ही हमारे पास बीजेटी का भी होता है. बेसिकली वी हैव 3 पी एन एंड पी, एन पी एन, basically permutation and combination types. So yeah, we can move on. Components, emitter, collector, and base, and they have different polarities type. You can think of that emitter is P, base is N, collector is P. Then base can be P and emitter and collector can be N. At any time, emitter and collector polarity is same but is different of that of base. This is simple BJT. So moving on. So yeah, I have just explained BJT, that BJT is of base, collector, and emitter. Now you may be all thinking that like in PN diode, we just represent it with a triangle and a forward slash. But but instead of thinking of that, let's move on to symbol of a BJT. BJT is of two types, NPN and PNP. So you got that right. Now let's move on to its symbol. Before moving to symbols, I want to just all of you to learn a thing and memorize a thing. It's a pretty simple thing, and you must know it already. That current moves from P to N side in forward bias. You just have to remember this. ध्रुव, once Yeah. like BJT का full form बता दे. Bipolar junction transistor. Basically, it is quite heavy, so I skipped it. BJT is bipolar junction transistor, and basically, BJT is bipolar junction transistor. And basically, moving to symbols. Before moving to symbols, you all just learn that current goes from P to N side in a PN junction diode in forward bias. In reverse bias, it does not allow current, so you just learn that. So if you have learned that current moves from P to N side, then just dive into it. For NPN, basically, as I told that there are two types, NPN and PNP. So for NPN, as you can understand, the middle letter is P. So there are three parts in BJT. I explained you: emitter, base, and a collector. So the middle one is the base, and here the middle collector is P. Middle letter is P. So base is in P configuration, and emitter and collector are in N configuration. And since you all have learned that current goes from P to N side, you just learned, and I gave you no logic, just you learned. So using that, I can say that current will go from P to N side, and so in NPN, it is depicted with an upward arrow. Because if current has to grow from P to N and base is the middle one, then there is only one configuration that current can go upward. So yeah, it's upward arrow. And in case of PNP, you just think that current has to go from P to N side, and since N is the middle one and P is the up one, so current can grow from P to N in only a downward configuration. So it is self-explanatory that if current is going from P to N, then we just have to make arrow from that
direction only. So if n is down and p is up, then p to n, so downward arrow. If p is at the middle and n is at top, then current has to go from p to n, so upward arrow. So yeah, you can just think of symbols like that. After covering symbols, let's move on a little bit. Yeah, so here comes the key, the golden thing that you must, somebody was just asking about switch, oscillatory switch. For him or her, I want to say that yeah, we have a switching as a very important concept in network analysis. We cover a whole chapter basically on switching, and combine it with time domain, that if we close the circuit at this point, open it at this point, then basically that is the subject, and it is very interesting too. Giving you a feel of transistor, like you all may be thinking that what is a resistor, then all you think intuitively is this, that current goes into resistor and resistor just heats up, capacitor stores charge, inductor stores in inductor also stores the energy, capacitor also stores the energy, resistor dissipates the energy, thinking it in the layman terms. तो वैसे ही ट्रांजिस्टर भी होता है. ट्रांजिस्टर को लेमैन की तरह सोच सकते हो, तो बेसिकली ये स्विच होता है, मतलब स्विच की तरह मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है ये इंडस्ट्री में. और वो कैसे, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं. बेसिकली हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ये मैंने अज्यूम किया है कि मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ. आउट ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन आई एम यूजिंग एनपीएन. सो एनपीएन ले रहा हूँ, तो बीच वाला लेटर जो है वो पी है, मतलब बेस जो होगा वो पी वाली कॉन्फ़िगरेशन में है, और एमिटर और कलेक्टर जो है वो एन कॉन्फ़िगरेशन में है. अब since I have told you that that current goes from P to N, so there is no way that current can go from N to P. Only P to N configuration is possible. So yeah, base is in P type and emitter is in N type in forward condition, and hence current flows from B to E. So तुम डायग्राम से देख सकते हो कि P से N जाना होगा, तो B से E ही एक configuration है जिसमें current flow कर सकता है. C से B में नहीं करेगा, अगर C मतलब C से B में नहीं कर सकता, वो N to P नहीं करता, ओनली P to N ही करता है. और मैंने अज्यूम कर रखा है कि इससे पहले VCC ग्रेटर देन VBB से पहले यू मस्ट ऑल बी थिंकिंग दैट, एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि तुम्हारे घर में वोल्टेज सप्लाई आती है, बट तुम सिलेक्टिवली स्विच करते हो कि जैसे घर की मतलब बाथरूम की ट्यूबलाइट ऑन करी है बट किचन की ट्यूबलाइट बंद कर दी. सो वोल्टेज सप्लाई तो हर जगह ही आ रही है, बट स्टिल यू आर सिलेक्टिवली थिंकिंग ऑफ कि तुम्हें वो पर्टिकुलर एलिमेंट ऑन करना है एंड पर्टिकुलर एक एलिमेंट ऑफ करना है. अगर तुम्हारे पास एक सिंपल सर्किट होता तो तुम ऐसे मतलब वोल्टेज सप्लाई दे रहे थे तो सारे डिसिपेट करते हैं एनर्जी, बट हियर इज अ स्विच कि रोल ऑफ स्विच आता है यहाँ पर कि तुम सिलेक्टिवली डिसाइड कर सकते हो कि हमें यहाँ पर इसे ऑन करना है और इसे ऑफ करना है. तो या तो ट्रांजिस्टर वहाँ पर यूज होते हैं कि वोल्टेज सप्लाई तो आ रही है सर्किट में, बट हम उस वोल्टेज सप्लाई को एक ही जगह यूज करें रादर देन इंस्टेडिंग ऑफ टू, और एक को हम स्विच कर लें या फिर सिलेक्टिवली डिसाइड कर लें कि ये ऑफ रहेगा ये ऑन रहेगा. सो या अब मैं एक और एजम्पशन ले रहा हूँ. एक एजम्पशन ली थी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है, दूसरी एजम्पशन ये ले रहा हूँ कि एक वीसीसी सोर्स है, एक वीबीबी सोर्स है, और उसमें भी वीसीसी ग्रेटर देन वीबीबी है. तो अब तुम देख रहे होगे सर्किट में कि वीसीसी जो है. एक्चुअली मी ब्रो लाइक हाँ, क्वेश्चन है हार्दिक का. ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई सिग्नल, सो हाउ एग्जैक्टली इट इज यूज्ड एज अ स्विच? Yeah, in certain cases transistor can be used as amplifier too, but for considering it as an amplifier, we just need to dive into a little more and things may be complicated. We can use it as an amplifier, for sure we can use it as an amplifier. BJT has one of its use as an amplifier, but not in this circuit. We have to use other circuits too and in different configuration. तो वो थोड़ा confuse करेगा. मेनली वो कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है कि लाइक हाउ यू प्लान अ सर्किट, कि वो उसको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है या स्विच की तरह यूज करना है. बेसिक ट्रांजिस्टर का काम स्विच की तरह ही होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके यू कैन यूज इट एज एन एम्पलीफायर. कंटिन्यू ध्रुव. या सो बेसिकली अगर इस अलग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम जो एम्पलीट्यूड आ रहा होगा उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं. या सो बट नॉट इन दिस सर्किट. दिस सर्किट इज बेसिकली कि तुम्हें एक फील आ जाए ट्रांजिस्टर की. सो एज आई वाज सेइंग, वीसीसी इज ग्रेटर देन वीबीबी. तो तुम देख सकते हो कि वीसीबी का जो एक एंड है वो सी टर्मिनल से कनेक्टेड है और वीबीबी का एंड जो है वो बेस से कनेक्टेड है, यानी कि बी से.
बट एज आई एम अज्यूमिंग दैट, एज आई एम सेइंग दैट VCC इज ग्रेटर देन VPP, तो इसका ये मतलब हो गया कि मैं इन वाली साइड को फोर्स कर रहा हूँ कि तू ज्यादा वोल्टेज पे हो, और VPP वाली यानी कि बेस कॉन्फ़िगरेशन को कह रहा हूँ कि तू कम वोल्टेज पर हो. But instead of that, I have already told you guys that current can flow from P to N, not from N to P. Basically, अगर तुम deep में जाओगे तो ऐसा सोचो कि N side higher potential पे और P side lower potential पे. तो बेसिकली डायोड की तरह कि जब जब डायोड में हम इन को हाई साइड पे रखते हैं और पी को लो साइड पे रखते हैं तो वो रिवर्स बायस में होता है और करंट फ्लो नहीं कर सकता. सो फॉर VCC, तो मैं VCC कितना ही बड़ा कर लूँ लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा उस सर्किट में N2P में. मतलब बेसिकली करंट can't flow in the resistor RC because current from N2P can't flow if N is at higher potential. Or you just remember that current can't flow from N2P because it is in reverse bias. So yeah, so we have achieved it कि वोल्टेज सोर्स तो दोनों सर्किट्स में लगे थे, बट स्टिल करंट इज ओनली फ्लोइंग इन RB नॉट इन RC बिकॉज वी हैव अ ट्रांजिस्टर. सो इसने प्रिवेंट कर लिया RC वाले स्विच को जलने से. बेसिकली RC की जगह ट्यूबलाइट होगी तो वो ऑफ हो जाएगी एज दैट ऑफ RB में ही डिसिपेशन होगी ओनली. सो या, सो हेंस इट एक्ट्स एज अ स्विच. मूविंग ऑन. Now, yeah, I guess you guys maybe feel a little complex, but I'm not diving into this IC555. I'm just explaining you the components. When you will as Abhay has already told you a little of analog and bit basics of analog, which are really quite good. Having mastered that, you can basically understand these things, which I am telling you right away. बेसिकली IC555 में हमारे पास फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होते हैं, कंपैरेटर्स होते हैं, डिस्चार्जिंग सर्किट होता है और एक आउटपुट सर्किट होता है, एज वेल एज एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है. सो ये मैंने काफी हैवी वर्ड्स बोल दिए, बट इसमें सिर्फ हम कंपैरेटर समझेंगे ताकि यू मे फील ऑल राइट एंड यू मस्ट फील इट्स जस्ट समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली इफ यू प्रैक्टिस द कंसेप्ट्स. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. Moving on to a comparator. So comparators basically take input of two n binary numbers and compare with which one is greater or whether they are equal. Before reading the statement, I want to make you all familiarize with all the CS students who have opted for 11 12 CS may know binary number system, but those who have taken physical education or are not familiar with it, for them I want to say that forget that it is a binary number, just think of it as number so that you can think that. So let's forget binary. Comparators take input of two n numbers, two n length numbers, and compare which one is greater or whether they are equal or not. सो या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि कंपैरेटर दो नंबर लेता है और उन्हें कंपेयर करता है कि क्या वो छोटे हैं, मतलब A इज लेस देन B है या A ग्रेटर देन B है या दोनों इक्वल है या फिर क्या है. मतलब वो उन्हें कंपेयर करता है कि उनके बीच में रिलेशनल क्या है, कि A लेस देन B, A इक्वल टू B, A ग्रेटर देन B. बेसिकली तुम सोच रहे होगे कि ये काफी इजी सही है, ये तो हम खुद भी कर लेंगे, बट अगर 10 की पावर 9 नंबर्स दे दूं मैं तो हर डिजिट को कंपेयर नहीं कर सकते कि मतलब वो इम्प्रैक्टिकल होगा, टाइम एफिशिएंट नहीं होगा कि तुम 10 की पावर 9, 10 की पावर 18 इतने बड़े नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो कि वो बड़े हैं छोटे हैं क्या है, वो कंपैरेटर्स पे छोड़ता है हम काम. सो इनफैक्ट वी कैन मेक इट. सो या, जब कंपैरेटर समझ में आ गए तुम लोगों को कि बेसिकली वो दो चीजों को कंपेयर करते हैं, सो वी कैन मूव ऑन टू इट्स ट्रुथ टेबल. तुमने जेई में भी करी होगी. सो या, बिफोर ट्रुथ टेबल, जिनको बाइनरी नंबर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था उनके लिए बाइनरी नंबर्स एक्सप्लेन कर देते हैं. Basically, binary number system is just like decimal number system to a decimal number system. Basically, number system अलग-अलग तरह के होते हैं, binary, decimal, hexadecimal, अलग-अलग, but all are similar. Like 244 एक decimal number system है, so मतलब decimal number system है, मतलब basically 244 को I can write it as 2 into 100 plus 4 into 10 plus 4. और अगर थोड़ा एक लेवल अप करूं तो 2 into 10 to the power 2 plus 4 into 10 to the power 1 plus 4 into 10 to the power 0. बेसिकली हम 10 के इंडेक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज को. लेट्स से दैट वी हैव अ नंबर x एंड इट इज एट पोजीशन y और वो डेसिमल है, देन वी कैन राइट इट एज x into 10 to the power y. सो जस्ट लाइक दैट कि 244 को तुम लिख सकते हो 2 into 10 की पावर 2 plus 4 into 10 की पावर 1 plus 4 into 10 की पावर 0, क्योंकि इंडेक्स तुम्हारा 0 1 2 है
जस्ट यू नीड टू नो कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स पता कर लिया, और वो मतलब बेसिकली है क्या 2 4 9 जो भी है वो नंबर, उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट इट्स कंट्रीब्यूशन इन द नंबर। सो वैसे ही बाइनरी नंबर्स भी होते हैं, तुम्हें बस इंडेक्सिंग पता करनी है 0 1 2 3 और 2 से 2 की पावर में ले जाके उसे मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिकली यही होता है। डेसिमल में नंबर सिस्टम में जैसे हमारे पास 10 होता है तो हम 0 से लेकर 9 तक चलते हैं। बाइनरी में 2 होता है तो हम 0 और 1 डिजिट से कंसिडर करते हैं, बेसिकली 0 एंड 1 से ही डील कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम तुम बस इतना सोचो 0 और 1 होते हैं। सो या so I hope everyone is following us as Siddharth has just written. So yeah, nice. So yeah, basically binary number system जब तुम्हें पता चल जाए कि 0 और 1 ही होते हैं, तो 0 और 1 ही होते हैं, so we have मतलब तुमने जेई में करा होगा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, बेसिकली वो बनाते थे होंगे कनेक्शन और तुम्हें बताना होता होगा कि इस इनपुट के लिए क्या आ रहा है। तो returning to comparators our topic, it is clear from the truth table of AND gate that the gate returns set bit। हाँ, एक और चीज, सेट बिट और अनसेट बिट। सेट बिट हम तब कहते हैं जब कोई भी इनपुट 1 होता है, और ऑफसेट बिट या अनसेट बिट हम तब कहते हैं जब वो 0 होता है। तो सेट बिट रिप्रेजेंट्स 1 एंड अनसेट बिट रिप्रेजेंट्स 0। सो एंड गेट का तुम्हें पता ही होगा कि जब दोनों बिट सेट होती हैं, दोनों बिट्स 1 होती है, ओनली देन इट इज रिटर्निंग 1, अदरवाइज इट इज रिटर्निंग 0। सो इट्स द बेसिक। सो जब तुमने एंड गेट पढ़ लिया तो अब हम मतलब यही एंड गेट के केसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर कि व्हेन बोथ ए एंड बी आर 0, मतलब बेसिकली ए एंड बी आर 0, सो ए एंड बी इज ऑल्सो 0। बेसिकली जब दो ऑपरेटर्स 0 होंगे तो भी वो 0 होगा। ओनली दोनों ऑपरेटर ऑन होंगे या फिर सेट होंगे सिर्फ तभी 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। सो या ये एंड गेट का था। इस एंड गेट को लेकर हम एनालॉगसली कंपैरेटर्स को भी देख सकते हैं, मतलब उसी को भी एनालाइज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है। यही उसके केसेस लिखे हुए हैं कंपैरेटर्स के कि अगर ए एंड बी आर 0, तो मतलब वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सो मूविंग ऑन, या तो ये रहे कंपैरेटर्स। अब एंड गेट का तुम एक बार फैमिलाइज हो चुके हो कि एंड गेट में मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो देखता है कि अगर दोनों 1 है तभी 1 रिटर्न करता है, बाकी 0 रिटर्न करता है। बेसिकली मतलब तुम फिर सेट थ्योरी से भी देख सकते हो कि अगर दो चीजें सही हैं तभी वो पूरा सही होता है, एक चीज गलत हो गई तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो वही है। वैसे ही कंपैरेटर्स का भी है। व्हेन ए इज 1 एंड बी इज 1, सो ए इज 1 एंड बी इज 1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि a इज इक्वल टू बी हुआ, हेंस वी गेट 1 इन द डिजायर्ड कॉलम। तो तुम देख रहे होगे a इज इक्वल टू बी में 1 है। व्हेन a इज 1 एंड b इज 0, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, 1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, सो वी गेट 1 इन दैट डिजायर्ड कॉलम। और फिर हम बाकी केसेस के लिए भी कर सकते हैं कि अगर a 0 हुआ b 1 हुआ, या a 0 हुआ b 0 हुआ, तो तुम वो देख सकते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, और उस डिजायर्ड कॉलम में 1 पुट कर सकते हैं। सो दिस इज सिंपल कि a 1 है b 1 है तो a इक्वल टू b वाले कॉलम में 1 पुट कर दिया, a 1 है b 0 है तो a ग्रेटर देन b वाले कॉलम में 1 पुट कर दिया। तो या बाकी केसेस के लिए भी तुम एक्सप्लोर कर ही सकते हो, विच इज a 0 b 0, तो a इज इक्वल टू b वाला कॉलम। या भाई यू कैन मूव ऑन। सो अब ये काफी बेसिक बोला जो भी मैंने अभी तक बोला, बट हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। हेडलाइन ये लिखी है, इट्स ओके टू थिंक लॉजिकली बट वी हैव अ फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अब हम इससे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जो अभी हमने ये ट्रुथ टेबल बनाई कंपैरेटर्स की। आई होप यू ऑल आर विद मी। सो या यू कैन राइट यस, आई गेस ओनली। या थैंक्स गाइस। सो ओके, आई गॉट इट। सो ये वी कैन, अब हम फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ थिंग डिराइव करने जा रहे हैं इससे। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, अभी तो मैं सिर्फ इतना पता था कि कंपैरेटर्स दो चीजों को कंपेयर करते हैं, और हाँ ठीक है भाई कि 1 एंड 0 के इनपुट डाल दिए, और जब वो इक्वल होंगे तो 1 देगा, छोटा होगा तो उसके कॉलम में 1 देगा, बड़ा होगा तो उस वाले के कॉलम में 1 देगा। अब देखते हैं इनके फॉर्मूलाज पर। बेसिकली मैं तीनों फॉर्मूलाज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट a इज इक्वल टू बी वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि दो तुम खुद एक्सप्लोर करो। For a is equal to b, we have a formula not a not b plus a into b.
सो बेसिकली मैं कहाँ से लाया इस फॉर्मूला को? मैं यहाँ से लाया कि तुम देखो a इज इक्वल टू बी वाले कॉलम में कब कब 1 है। 1 तब है जब a 1 है b 1 है, तब a इज इक्वल टू b में 1 है ऑब्वियस। और a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 0 है, तब a इज इक्वल टू b वाले कॉलम में 1 है। मतलब जब दोनों इनपुट्स 1 है बेसिकली तब 1 कह रहा हूँ मैं। तो वही लिखा हुआ है। और ऑपरेटर तुमने पढ़ा होगा जे के टाइम में कि वो देता है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, मतलब कोई भी सेटिस्फाई हो जाए तो काम चल जाएगा अपना। तो a इंटू बी एक कंडीशन हो गई जिसमें वो दोनों 1 है। और नॉट ए और नॉट बी तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर a 1 है तो नॉट ए 0 होगा और नॉट बी 0 होगा। तो बेसिकली a इंटू बी आ गई 1 1 कंडीशन के लिए और नॉट बी आ गया 0 0 कंडीशन के लिए। और प्लस मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये कंडीशन भी चाहिए, वो कंडीशन भी चाहिए, दोनों मतलब कोई भी हो जाए तो दोनों ही फेवरेबल है अपने को। सो आई होप या दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट कि नॉट ए नॉट बी प्लस ए इंटू बी, ये दो फेवरेबल कंडीशन है इसलिए प्लस से रिप्रेजेंट करा। तो एंड सिमिलरली यू कैन थिंक ऑफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। और मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर कि और इज डिनोटेड बाय प्लस फॉर डिफरेंट कंडीशन एंड इज डिनोटेड बाय डॉट यानी कि मल्टीप्लाई फॉर साइमल्टेनियस कंडीशन। और मतलब होता है कि डिफरेंट कंडीशन को हम एक साथ ला रहे हैं तो प्लस लगा दिया, और एंड मतलब होता है कि मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए इसलिए डॉट लगा दिया। अब ट्राई योरसेल्फ एंड सब्स्टिट्यूट zeros and 1 to find the answer. So I guess you can think अब ये काफी सिंपल है, नॉट ए इंटू नॉट बी प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी हमने 1 1 ले लिया और नॉट ए नॉट बी 0 0 ले लिया। So yeah, moving on. अब एक लेवल और अप लेके जाते हैं चीजों को। अभी तुमने यू हैव जस्ट नाउ स्टडीड अबाउट कंपैरेटर्स। व्हाट आर कंपैरेटर्स? कंपैरेटर की ट्रुथ टेबल भी बना ली अपन ने, एंड वी हैव created mathematical formulas also for comparators from just simple thinking. Now with the help of mathematical formulas, why I'm focusing on mathematical formulas is that because with the help of mathematical formulas I can actually use my gates, and with the help of gates I can use them in practical circuits. So we have studied about comparators, truth table of comparator, then mathematical formulas, and finally the most interesting part, which is the gates. Because with the help of gates we can create actual circuits. So yeah. So Excuse me, Dhruv, like there's a question. Tarang asks, ये already designed होता है या ऐसे conditions के हिसाब से बनाना पड़ता है? Tarang, what are you talking about, like gates or comparators? Comparators में जो डिजाइन होता है ये ऑलरेडी इनके अंदर एस्टैब्लिश होता है या हमें कनेक्शंस करके समवॉट NAND गेट्स लगा के बनाना होता है? कंपैरेटर्स इज बेसिकली ये तीन तरह के कंडीशंस हो गए, a greater than b, a less than b, a equal to b. मतलब ये I'm asking basically this is already in the design of the comparators. Basically, Tarang, ये like हमें डिजाइन करना पड़ता है and then माइक्रो लेवल पर मास प्रोड्यूस होती हैं चीजें, हाँ and how are the gates designed, we'll be discussing that in the following बेसिकली slide. अगर तुम पूछ रहे हो कि ये प्री डिजाइंड होता है तो हाँ, क्योंकि कंपैरेटर कुछ जो तुम पहले बनाओगे वही आगे भी बनेगा और लॉजिक तो सिंपल ही है। तो तो बेसिकली यही होता है। मतलब इसमें अगर तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है कि कंपैरेटर्स को मॉडिफाई करना है कि मुझे दो नंबर को कंपेयर नहीं कराना, मुझे कुछ n नंबर्स को कंपेयर कराना है, देन you can actually modify it, but for 2 numbers this is the system only. 3 4 numbers के लिए तुम actual modify कर सकते हो, just think of logic. as सिद्धार्थ told कि हम उसे माइक्रो लेवल पे डिजाइन करते हैं और फिर बनाते हैं, मास प्रोड्यूस करते हैं। so yeah, a greater than b, a less than b और a equal to b के मैथमेटिकल फॉर्मूलेस आ चुके थे, उनसे हमने ये डिजाइन कर लिया। दैट इज हमने पढ़ा था कि a is equal to b का फॉर्मूला नॉट a नॉट b प्लस ए बी। तो तुम देख सकते हो जब इसमें तुम जेई वाले उससे देख सकते हो कि ये सेम ही है। सो या वी कैन मेक एक्चुअल सर्किट्स फ्रॉम द मैथमेटिकल थिंग्स। सो ए ग्रेटर देन बी का ये आ गया, ए लेस देन बी का स्विच कर दिए इनपुट्स, ए इक्वल टू बी का भी आ गया। सो या सो मूविंग ऑन। So yeah, there is basically a hint I want to give you guys so you can explore on your own. अब ये तो ठीक था कि मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूले से अपने चुपचाप वो बना लिए सिंबल्स से फिर सर्किट्स बन गए, बट आई यूज केव मैप्स एक्चुअली। सो व्हाट आर केव मैप्स एंड हाउ डू दे वर्क? CA students may know, but for others I want to hand it over to Siddharth from here because you can explore cave maps on your own.
तो सारी चीजें स्पून फीड नहीं करेंगे, थोड़ा सा तुम खुद एक्सप्लोर करोगे तो वो चीज तुम खुद ही ज्यादा समझोगे। बेसिकली a ग्रेटर देन b के लिए मैंने ये सिंपल सा बनाया है 0 1 0 1 एंड a, जब a b से बड़ा होगा तो वो एक ही केस है 1 0 में कि a 1 पास करो b 0 पास करो। सो या आई हैव गिवन अ प्रीटी मच स्ट्रेट हिंट दैट हाउ कैन वी डील विद दिस गाइस। सो केव मैप खुद पढ़ना और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, चीजें विल बी इजी एंड देन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स। So yeah, handing it over to Siddha, and he will dive it you in digital circuits and have a fun. So this is for just comparators. I want to say that this is for 2 numbers, so you can explore it also, basically. So handing over to Siddha. Yeah. Thank you so much, Abhay and Dhruv. Now, like we'll be diving into the digital circuits, and जो हमने अभी तक एनालॉग में डिस्कस करा है, that will be really helpful here. Like Bhuvan Verma asked, what is the concept behind binary numbers in the circuit? One has high potential and zero has low potential. I'll be discussing all of that here in digital circuits. Abhay, next slide. So basically, logic gates are like Bhuvan, you correctly like बिल्कुल सही कहा तूने कि one high potential होता है and zero low potential होता है, और we can say that one is true and zero is false, or we can also say that कि one is high and one is zero is low. तो लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, बेसिकली कोई लॉजिक होता है ना 1 और 0 का, उसके अरिथमेटिक करता है उसको, प्लस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग बाइनरी नंबर्स को प्लस करते हैं, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। आई एम सेइंग लॉजिक को करते हैं, लॉजिक को कंपेयर करते हैं वो। तो बेसिकली लॉजिक गेट्स बस एक अभी आगे हम देखेंगे तो आप देखोगे, लाइक आपने ऑब्वियसली लॉजिक पढ़ा होगा इससे पहले भी। तो लाइक अबे नेक्स्ट स्लाइड। तो दीज आर द बेसिक गेट्स। आपने ऑब्वियसली ध्रुव के साथ डिस्कस करा, एंड और एंड नॉट आप डिस्कस कर सकते हो। We'll not only be diving into these gates, but we'll be discussing how these gates are made using transistors and diodes. Practically कैसे इनको यूज करते हैं, वर्किंग कैसे होती है इनकी। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट गेट एंड गेट, और ध्रुव ने आपको लाइक बेसिक एक्सप्लेन कर ही दिया है। एंड गेट इज बेसिकली लाइक you can see the boolean expression here, a dot b. It is basically the multiplication of logic, and you can see the truth table, 0 into 0 is 0, 1 0 is 0, 0 1 is 0, and 1 is 1. तो बिल्कुल अगर लेमैन लैंग्वेज में जाऊँ ना मैं, तो लाइक एक इंग्लिश की स्टेटमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आई एम हियर एंड आई हैव टू बाय ब्रेड। सो लाइक अगर ये स्टेटमेंट है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है आई एम हियर, इफ दैट इज ट्रू, एंड जो सेकंड पार्ट है एंड आई हैव टू बाय द ब्रेड एंड दैट इज ट्रू, तो पूरा स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब ये दोनों कंडीशंस आर ट्रू। तो बेसिकली जब आपको दो कंडीशंस दी गई होती हैं एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रू, तभी एक एंड गेट आउटपुट ट्रू देता है। लाइक जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं, हाई होते हैं, ट्रू होते हैं, तभी आउटपुट ट्रू या 1 आता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सर्किट हियर कि the V is our voltage, R is our resistor to like manage the current, output is our output obviously, and हमारे इनपुट्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यू कैन सी कि हमारे डायोड अभी ऐसे लगे हैं। तो जब, अब आप खुद बताओ, लाइक आपने पीएन जंक्शन पढ़ा हुआ है, जब ए और बी हमारा जीरो होंगे दोनों, लाइक ए और बी पे वोल्टेज जीरो होगी, तो the voltage would be high on the right side of the diodes. तो सारा करंट जो होगा दैट वुड पास थ्रू फ्रॉम बी टू ए एंड बी, कुछ भी आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा। तो लाइक आउटपुट जीरो आ जाएगा, तब दोनों जीरो है। जब एक 1 है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 हमारा ए ट्रू है, और ट्रू का मतलब मेरा है कि जो पीएन जंक्शन का राइट साइड का जो वोल्टेज है ना, उससे ज्यादा वोल्टेज है ए का, तभी ट्रू होगा। तो जब वो ए होगा, तो जो ए वाला पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो कोई करंट उस साइड पास नहीं करेगा, बट बी वाला Basically somebody is writing that you are सिद्धा को ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आई कैन सी दैट। तो लाइक ए अगर 1 है, तो ए वाला पिन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा एंड बी वाला फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि बी 0 है। तो ए के थ्रू तो पास नहीं करेगा करंट, सारा करंट बी के थ्रू पास कर जाएगा, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। नाउ लाइक लास्ट केस पे जाते हैं कि दोनों ट्रू है, दोनों का पोटेंशियल ज्यादा है बहुत, तो दोनों ही रिवर्स बायस होंगे, नो करंट विल बी पासिंग थ्रू ए और ना बी पे, सारा करंट आउटपुट पे चला जाएगा। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द एंड गेट। ये बिल्कुल एंड गेट मतलब हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड।
नाउ दिस इज द बेसिक हार्डवेयर मॉडल ऑफ द एंड गेट. यू कैन सी कि लाइक ऊपर 0 है, नीचे 1 है, दैट रिप्रेजेंट द इनपुट. जो ब्लू वायर है ना, उससे मैं इनपुट दे रहा हूँ. 0 इज द लॉजिक 0, 1 इज द लॉजिक 1. नाउ अबे प्ले, जब दोनों इनपुट 0 हैं, एलईडी डज नॉट लाइट अप. जब एक इनपुट 0 एक इनपुट 1 है, तब भी एलईडी डज नॉट लाइट अप. बट जब हमने दोनों इनपुट्स 1 कर दिए, देन द एलईडी लाइट्स अप. अभी लाइक कैन यू गो अ स्लाइड, जो प्रीवियस स्लाइड दिलप्रीत कह रहा लास्ट वाला रिपीट करने को. दिलप्रीत 1-1 वाली कंडीशन रिपीट करनी है. वी वांट मी टू रिपीट द होल थिंग. हाँ जी हाँ भैया. सो लाइक जब 1-1 होगा तो दोनों पीएन जंक्शन के जो राइट साइड पे पोटेंशियल है, ए और बी का पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा. तो इस कंडीशन में दोनों पीएन जंक्शन आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे. अब ठीक है, वो एक्चुअली आवाज कट गई थी. हाँ ओके ओके. हाँ, तो रिवर्स बायस हो जाएंगे, सारा करंट आउटपुट पे चला जाएगा, तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा. या अभी लाइक आगे चल रहे हैं. So should I play the video as well again? हाँ, वीडियो लाइक यू कैन सी द वीडियो वंस अगेन. कि लाइक दोनों 0 हैं तो आउटपुट नहीं आ रहा. एक 1 है एक 0 तब भी आउटपुट नहीं आ रहा. एंड लास्ट कंडीशन, जब दोनों 1 हो जाते हैं तो हमारे को आउटपुट मिल जाता है. ये मैंने सेम जो सर्किट बनाया था, दिखाया था, उसी पे मैंने ये बनाया है. अगर आपको लाइक डाउट हो रहा है व्हाइट कलर की चीज क्या है, दैट्स बेसिकली ब्रेड बोर्ड. इस पे हम बेसिक सर्किट डिजाइन करते हैं. डिजाइन नहीं, लाइक टेस्टिंग चलती है इस पे सर्किट की. लाइक इस पे आप होल्स देख रहे हो, तो वो इंटरकनेक्टेड होते हैं अंदर से. 5-5 के पेयर्स में कनेक्टेड होते हैं होल्स. या अबे नेक्स्ट स्लाइड. It was also lighting up when you were physically moving the blue wire, but यार that was because I didn't have a physical switch. अगर like एक मैं physical switch use करता ना वहाँ पर, तो वहाँ switch ऐसा नहीं होता. तो like इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यार कोविड था and I didn't have the resources. So like I just made it with the wires. तो और गेट का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें लाइक डायोड उल्टी एंड वोल्टेज की जगह हम ग्राउंड लगा देते हैं. इसमें आप देखोगे कि जब ए और बी दोनों 0 है, तो ऑब्वियसली कोई करंट ही पास नहीं करेगा पूरे सर्किट में, तो आउटपुट 0. एंड लाइक जब ए 1 है तब भी करंट पास करेगा, एंड बी 1 है तब भी करंट पास करेगा, दोनों 1 है तब भी करंट पास करेगा. एंड वही लेमैन टर्म्स में अगर और गेट की भी बात करूं, तो जब एक भी कंडीशन ट्रू होगी, कोई स्टेटमेंट ले लो, लाइक कुछ भी स्टेटमेंट ले लो, आई एम देयर और आई एम हेयर, या ये थोड़ा एब्सर्ड हो गया, लाइक आई एम देयर, द डोर इज ओपन और द डॉग इज आउट, ऐसे कोई एब्सर्ड स्टेटमेंट ले लो. अब लाइक अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, क्योंकि और है. तो इसका भी बेसिकली वही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब भी 1, एक स्टेटमेंट ट्रू है तब भी 1. दोनों अगर फॉल्स हैं स्टेटमेंट्स, तो आउटपुट आपका फॉल्स ही आएगा. नेक्स्ट स्लाइड. ये फिर से फिजिकल मॉडल है, लाइक वही 0 एंड 1 देख सकते हो. जब दोनों 0 हैं तो इट डज नॉट लाइट अप, एंड जब एक भी 1 होता है इट लाइट्स अप. एंड दोनों 1 पे भी देखो आप, लाइक कैन सी द एलईडी लाइट्स अप. या अब दोनों 0 हो गए तो फिर वही एलईडी बंद हो गया. नॉट गेट बड़ा ना स्पेशल गेट है. लाइक नॉट गेट इज द ओनली गेट जिसका सिर्फ एक ही इनपुट होता है. नॉट गेट, और इसको बेसिकली कई बार इन्वर्टर भी कहते हैं, बिकॉज ये बेसिकली जो इसका इनपुट होता है ना, उसको उल्टा कर देता है. यहाँ पर हमारा पहला कंसेप्ट आएगा, जो लाइक जो हमने एनालॉग में डिस्कस करा था पीछे, जो ध्रुव ने एक्सप्लेन करा था ट्रांजिस्टर्स का. अगर मैं थोड़ा सा एक बिल्कुल छोटा सा ओवरव्यू दूं उस पे, तो ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है. जब उसके ये लाइक तुम्हारे को जहाँ R1 दिख रहा है वहां पर हम उसको इनपुट अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली इट अलाउज द करंट टू फ्लो 5 वोल्ट से ग्राउंड तक को अलाउ करेगा फ्लो करना, जब हम एक्स पे इनपुट लगाएंगे. और अगर एक्स पे कुछ भी नहीं लगाएंगे तो 5 वोल्ट से ग्राउंड वो ट्रांजिस्टर पे ही रोक देगा, करंट को जाने ही नहीं देगा उसके थ्रू. तो नॉट गेट का वही होता है कि लाइक अगर 0 दो पे तो 1 देगा, 1 देगा तो 0. अगर हम इसका सर्किट एक्सप्लेन करें तो लाइक आप इसको ध्यान से देखना, ट्रांजिस्टर का है ये. तो जब हमने एक्स पे वोल्टेज लगाई तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, सारा करंट ग्राउंड पे 5 वोल्ट से, जेड पे कुछ आएगा ही नहीं करंट, तो लाइक आउटपुट नहीं मिला. बट अगर एक्स हमने 0 लगाया तो करंट पास करेगा नहीं ग्राउंड पे, सारा करंट जेड पे चला जाएगा, तो 1 आ जाएगा. तो दैट्स द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द नॉट गेट. यहाँ पे फर्स्ट हमारा ट्रांजिस्टर यूज हुआ है.
लाइक आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, तो इसके आगे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। तो आई गेस ऑल राइट। Then I guess we should move ahead. या एक बार वापस बता दो भैया, नॉट गेट बताना गीतांश। गाइस एक और चीज, एक बार अटेंडेंस फिल कर दो इस फॉर्म पे, लिंक है चैट में। कमल सिंह लाइक अबे एक बार पीछे कर दे, लाइक 2-3 बंदों को डाउट है यार। देखो ट्रांजिस्टर में फिर से बताता हूँ, ध्रुव ने भी एक्सप्लेन करा था। ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो तुम एक्स वाला देख रहे हो ना, एक्स जहाँ हमारा इनपुट है, ट्रांजिस्टर एक स्विच कैसे काम करता है, जो एक्स हमारा, एक्स बेसिकली हमारा बटन होता है, ठीक है। हम एक्स पे कुछ अप्लाई करेंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और वो ऊपर से नीचे करंट फ्लो करने देगा, और अगर हम एक्स को नहीं कुछ भी करेंगे तो ट्रांजिस्टर अलाउ नहीं करेगा करंट पास करना। तो तुम खुद देखो, जब हमने एक्स पे वोल्टेज लगाई, मतलब एक्स ट्रू है या एक्स पे 1 लगाया, तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ट्रांजिस्टर हम फ्लो ऊपर से नीचे करने देगा करंट, तो 5 वोल्ट से सारा करंट तुम्हारा ग्राउंड पे चला जाएगा, जेड पे कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब जेड पे 0 आ गया, हमने 1 लगाया, जेड पे 0 आ गया। बट अगर हमने एक्स पे 0 लगाया तो ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होएगा और वो नीचे जा ही नहीं पाएगा करंट, तो सारे करंट को जेड पे जाना पड़ेगा, तो हमारा आउटपुट वहां से 1 आ गया। नाउ आई होप दैट इज क्लियर, बिल्कुल बेसिक समझा दिया मैंने। Okay. ओके डायरेक्शन नहीं देखी, दिस इज पीएन। हाँ यार, ये एनपीएन है यार, ये दिस इज द लाइक हार्डवेयर। एंड लाइक देखो अभी 1 पर है तो एलईडी लाइट नहीं कर रही, 0 पे जाएगा तो लाइट कर देगी। एंड वही लाइक गीतांश ने, किसने पूछा था पीछे, हाँ गीतांश ने ही पूछा था कि लाइक वो पहले ही क्यों लाइट कर रहा है। दैट बेसिकली बिकॉज मेरे पास स्विच नहीं था। लाइक अगर मेरे पास स्विच होता एक, मैं स्विच को दबाता तो वो कर जाते। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। नैंड गेट, नैंड गेट बेसिकली एक एंड गेट होता है विद अ नॉट गेट एट इट्स एंड या एट इट्स आउटपुट। सो व्हाट हैपेंस इज, हमारा एंड गेट होता है एंड उसके आगे एक नॉट गेट लगा देते हैं, एंड उसके आगे जो हमारे को आउटपुट मिलता है उसको हम नैंड गेट का आउटपुट बोलते हैं। तुम यहाँ ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो। एंड गेट में द ओनली कंडीशन व्हेन द आउटपुट वाज 1 वाज व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 1, बट in the NAND gate the only condition when the output is not 1 is the condition where both inputs are 1। बिल्कुल उल्टा है उसका, लाइक तभी इसको नॉट कहते हैं, नॉट बिल्कुल उल्टा कर देता है ना, 0 को 1, 1 को 0। अब इसका सर्किट डायग्राम अगर तुम्हारे को पुराने डायग्राम थोड़े से याद आ रहे हैं तो लाइक मैं अभी ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे को इसमें कुछ फेमिलियरिटी दिख रही है पुराने, जब मैंने अभी 3 डिस्कस करे, लाइक किसी का थोड़ा चल रहा है दिमाग यहाँ पर? यार लाइक हाँ ना बोल दो, लाइक नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। गाइस थोड़ा इंटरेक्ट तो करो। कौन लाइक लिख कौन रहा था अभी तक चैट में? गीतांश एंड हम थोड़ा थोड़ा गेट एक्सेप्ट एक्सेप्ट विशाल नॉट विद द गेट। चलो मैं बता देता हूँ, अब तुम ध्यान से देखोगे ना अगर, तो इसमें एक लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट है और एक राइट पार्ट ऑफ द सर्किट है। लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट में डायोड्स हैं। हाँ भुवन, भुवन गॉट इट राइट। लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जो है वो एक एंड गेट का सेम सर्किट है जो हमने पीछे डिस्कस करा था। अबे लाइक एंड गेट की साइड पे एक बार जा सकते हैं फिर से? Yes. हाँ देखो ये बिल्कुल सेम सर्किट है कि दो वो उल्टे लगे हैं दो। एंड आगे लाइक वापस उसका जा एंड पे। हाँ एंड गेट है, एंड गेट के आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया ट्रांजिस्टर यूज करके, तो और उसका आउटपुट ले लिया। लिटरली हमने जो डेफिनेशन बोली कि एंड गेट के आगे नॉट गेट लग जाता है, हमने लिटरली उसको सर्किटरी में अप्लाई कर दिया। एंड बट नॉट गेट लगा लो, आ जाएगा। हाँ उन्हें बोलो यस राइट। लाइक यार सबने नहीं पढ़ा होता तो लाइक मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा था। अब लाइक ये बिल्कुल इसकी बेसिक वो है। इसको मैं आई होप एंड और नॉट गेट सबको समझ आ गया होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा सर्किट को कि लाइक एंड गेट का आउटपुट आएगा फिर नॉट गेट उसको नॉट कर देगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट।
I guess we should move ahead to the hardware part. हाँ या वी शुड मूव इट। यही वही हार्डवेयर पार्ट। अब यहाँ पे देखो दोनों 1 है तो 0 आ रहा है, आउटपुट है ही नहीं। एक भी 1 हुआ तो आउटपुट आ गया, और अब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट फिर से 1 आ जाएगा। लाइक मुझे तो ये लाइक इसका सर्किट एप्लीकेशन देख के एक्साइटमेंट हो जाती है थोड़ी सी। लाइक आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय इमोशन विद दिस। लाइक अभय ने भी जब अपना सिमुलेशन एक्सप्लेन करी एंड लाइक मैं भी, ध्रुव ने अपना पार्ट, लाइक हमें एक्साइटमेंट हो जाती है ये सब करते हुए। लाइक आई होप यू कैन रिलेट टू अस। अभय नेक्स्ट स्लाइड। नॉर गेट। अब भाई नॉर गेट के नाम से समझ आ गया होगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द नैंड गेट। नॉर गेट is basically an OR gate with the NOT gate in front of it. You can see the truth table 2. 0 0 पे सिर्फ 0 0 पे OR गेट 0 होता था, बाकी सारी कंडीशन में 1 होता था। बट एक NOR गेट सिर्फ 0 0 पे 1 होता है। एंड इसका अगर सर्किट ध्यान से देखो तो वही, एक अगर किसी का थोड़ा सा याद है पुराना किसी को, तो लेफ्ट वाला पार्ट सेम टू सेम OR गेट है एंड राइट वाला पार्ट इज अ NOT गेट इन फ्रंट ऑफ इट। हाँ गीतांश राइट। तो आई होप इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करता, तो लाइक इट इज क्लियर ना। अब इसके बाद लाइक हार्डवेयर करते हैं, फिर मैं एक चीज बताता हूँ आपको। यही हार्डवेयर है तुम्हारा। लाइक जो तुम्हारे को छोटे छोटे काले काला दिख रहा है ना, वो बीच में दोज आर डायोड्स, एंड फिर उसमें मैंने छोटे 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 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं उसके बीच में। लाइक आई होप यू कैन सी दैट। लाइक तुम देख सकते हो, लाइक 0 0 पे आ रहा है एंड 0 1 पे बंद हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर लाइक नाउ विल डिस्कस 2 गेट्स दैट आर बेसिकली द लाइक क्लस्टर कर देते हैं हम, मिक्स एंड मैच कर देते हैं बाकी सारे गेट्स को मिलाकर ये 2 गेट्स बनते हैं। बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट गेट्स बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तुम आगे जाके लाइक डिजिटल जब पढ़ोगे, इफ यू आर इन इलेक्ट्रिकल ईसीई एंड लाइक सीएस की ब्रांच में भी आता है डिजिटल, आई गेस। या आई एम राइट अबे? Yeah, this is common for IT, electrical, electronics and communication, and engineering physics as well. So yeah, हाँ I या think ईपी एज most वेल of you will. या। तो ये सब तुम डिजिटल में पढ़ोगे ना जब, तो लाइक तुम्हारे को देखेगा कि व्हेन विल बी मेकिंग सर्किट्स दैट ऐड बाइनरी नंबर्स, या ईई में होगा ब्रो। जब हम सर्किट्स बनाएंगे जो बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें दिस गेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट। तो लाइक XOR gate is also known as exclusive OR gate is the gate जब तुम्हारे आउटपुट्स सेम नहीं होंगे ना तभी 1 आएगा आंसर। लाइक 1 0 पे 1 आ रहा है ट्रुथ टेबल में, 0 1 पे भी 1 आ रहा है, बट 0 0 1 1 पे 0 आ रहा है। ये स्पेशल गेट है एंड इसका गेट्स का डायग्राम तुम देख सकते हो। 2 नॉट गेट्स हैं, 2 एंड गेट्स हैं एंड एक और गेट है। वी हैव अ सब्जेक्ट डीसीएस। हाँ यार डीसीएस ईसीई में भी होता है। वही मैं अभी ने जो बोला वो 4-5 बोलिए सब में होता है। Digital is like, हाँ, in terms of core, etc., it is primarily an electronics and communication subject, बट वो but it is होता also नहीं taught to IT. सर कर रहा था मैं डीसीएस का, वो पूछा था ना। है। ऑलराइट कोई नहीं, ये सर्किट कंपैरेटर में भी यूज कर रहा था ना ब्रो। बेसिकली मैं ये बोलने वाला था, आंसर करने वाला था। कंपैरेटर में ये यूज करा था बट हमने नॉर ऑपरेटर ही लगाया था। बेसिकली तुम देखोगे तो 0 0 के आगे 0 है, उसमें 0 0 के आगे 1 है। इसमें हमने 2 ग्रीन नॉट ऑपरेटर्स लगाए। ये बेसिक फर्क है। लाइक दिखने में सेम लग सकता है बट एक भी गेट के चेंज होने से पूरा लाइक चेंज हो जाता है सर्किट। Like if you want to know if there is a particular case where this is like simply directly applied, and those are certain adder circuits which you study या about. वही मैंने जो बोला था, बाइनरी सर्किट जब ऐड करने वाले सर्किट बनाते हैं दैट आर बेसिकली कॉल्ड हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स। So in उसमें ये that, these सीधा gates are directly applied. या आई होप XOR गेट इज क्लियर टू एवरीवन। लाइक इसका सर्किट थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो आई डिडंट रियली शो इट हियर। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड। XNOR gate, as the name suggests, just an XOR gate with a NOT gate in front of it.
या थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके हम इसका सर्किट ऐसे भी बना सकते हैं कि एक नॉट गेट का हमने पोजीशन चेंज कर दिया, व्हेन यू विल बी लाइक लर्निंग बूलियन अलजेब्रा एंड ऑल, तुम्हारे को ये क्लियर हो जाएगा हमने ऐसे क्यों करा। एंड वही एक्सऑर गेट में जब दोनों इनपुट्स ऑपोजिट होते थे, द आंसर वी गॉट वाज 1, बट इसमें जब सेम इनपुट्स होते हैं ना तभी 1 मिलता है। यू कैन सी इन द ट्रुथ टेबल 0 0 पे 1 एंड 1 पे 1। तो आई होप ये लास्ट गेट था हमारा एंड दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So I think that's it for the theoretical Yeah. part from our side. Now Like, we'll have the Kahoot quiz. Before the Nice, Kahoot we- quiz, I really want to ask everyone, like even in digital analog or the comparator part, किसी को भी कोई doubt है तो you can ask. I hope everything is clear to you guys. All right. Like, I think Abhi, we can go with the Kahoot quiz. Like, Yeah. Or before the Kahoot quiz, guys want to like talk something, or हम directly quiz पे जाए. Yeah, if there are any doubts, they are most Doubts हैं या कोई बात करनी है like, तो कुछ भी बोल दो यार. Like, lecture नहीं है तुम्हारा ये क्लास का. Guys, कर लो नहीं, अच्छा सेशन था भैया, मजा आया। क्या मतलब अगले प्रोफेसर की सीट खाली और सिद्धक भैया तैयार है? दिलप्रीत तेरे को ना मैं मारूंगा बहुत। अबे भैया सच में अच्छा पढ़ाते हो आप। अरे बढ़िया अच्छा पढ़ाते हो, अप्रिशिएट कसम से। भाई अभय सर है यहाँ पर, लाइक इन्होंने बोल दिया भाई तीनों। नहीं मैं झूठ नहीं कहूंगा, जब मैंने क्लास ज्वाइन की मैं गुरुद्वारे गया था तो मैंने सिर्फ आपसे ही पढ़ा, तो मैं ऐसे क्यों कहूंगी। भाई हम तो सही टोटल लोग हैं भाई सेकंड ईयर के। सिद्धक सर आप अभी प्रणय सर बैठे हैं, बहुत अभिज्ञान सर, प्रणय सर, अभिज्ञान सर बैठे हैं, दे आर लाइक गॉड, Arduino God. like I want like अभिज्ञान सर and प्रणय सर to say something. ठीक है, हो रहा है भाई, अभी अपना प्रमोशन कर लो। This is अभिज्ञान सर, ये गॉड बंदे हैं बहुत बड़े। You language of Like God. I think we should move on to the Kahoot quiz. Yeah. भैया हाँ गीतांश, अगर मुझे फर्दर सीखना है या फिर आर्डुइनो वगैरह के बारे में सीखना है सर्किट डिजाइन में, तो फिर वो मैं कैसे कर सकता हूँ अभी? हाँ मेरी भी सेम क्वेरी है। भैया IEEE में सिखाएंगे ये सब? हाँ भाई, like एक minute let me complete. So electronics is a slightly nuanced field. So IoT, and that is one component as well. This is another circuit design जिसमें हम amplifiers etc. जो basics आपको introduce करेंगे. That involves microprocessors and different kind of things. तो उसका एक separate domain है, इसका separate है, and yes, you learn about everything when you join IEEE. Of course, we and have also like तुम्हारे करिकुलम में भी है ये, लाइक ईई के जैसे अभय ने पहले बोला था, ईई, ईसीई, ईपी एंड लाइक सम कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, इसमें तुम्हारे सिलेबस में भी है ये थोड़ा बहुत पार्ट। बेसिकली IEEE ज्वाइन करोगे तो SIGs होती हैं अलग-अलग, मशीन लर्निंग, सर्किट डिजाइन सब सीख लोगे। And the one who asked about the Arduino, कल एक Arduino की भी वर्कशॉप है, and I would like, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, you should attend that. भैया TechWeek कब तक चलेगा? Like कल लास्ट डे है यार। अच्छा। So I'm beginning with the Kahoot right now. Let me share. Guys, do fill the form. अबे एक बार IEEE and SIGs के बारे में बता दो। Yeah, so I think बहुत लोग interested भी हैं। we have SIGs for everything here. There is like, you saw many sessions this week, na? You had web design, you had DSA, you had basic programming. So for every domain, a certain set of senior students who are well versed in those particular streams will advise you. And like in our case, our seniors are like Abhigyan sir is there, there's Ritik sir, etc. So like you were asking about IoT. So last time Abhigyan sir presented the session regarding IoT, and regarding circuit design there were also Ritik sir and different. So this time we are taking over. We are concerned with this field, and I think there are a good number of groups. I think there are almost 10 groups SIGs out there when you officially join
and in that all relevant material related to your streams and everything will be shared regarding, like, these days also some of us are also sharing doubts late at night with our seniors, and they are extremely helpful, so they clear out. थैंक यू भैया। भैया एक्चुअली एक रेलिवेंट क्वेश्चन तो नहीं था, बट एक बात पूछनी थी कि मेरे को एक्चुअली एक लैपटॉप लेना था, मेरा मैकेनिकल है, तो मेरे को जो काम आ जाए दोनों मेरे से कौन सा लूं? डीएम पे बात कर लियो जी। Actually, you are in mechanical, na? So Yeah. the session before this was for SolidWorks. I think that is related to your SolidWorks. एक्चुअली भैया ऑल्सो दिलप्रीत, लाइक तेरे को अगर ये डाउट है ना तो यार तुम, तेरा मेरा नंबर है भाई, मेरे को कॉल कर। हाँ, मैं आपको कॉल करूंगा। मेरे को लगा यहाँ पूछना ठीक रहेगा। नहीं यार, काफी ज्यादा अच्छा बता देंगे ना सर। No worries. I Okay. think नो वरीज यार, we'll लाइक begin with the Kahoot. मैं आपको पर्सनली DM कर दूंगा। थैंक यू भैया। Yeah, great. गाइस एक बार फॉर्म भर देना यार वो, हाँ यार वो फॉर्म भर देना अटेंडेंस का, लाइक ध्रुव ने 4-5 बार डाल दिया है चैट में, एंड So यू this is कैन the pin for the Kahoot. अबे can you just tap on the pin, it'll copy the link and you can paste Yeah, it on the definitely. chat. Yeah. I hope जो आ रहे हैं वो फॉर्म भर के आ रहे हैं। हाँ यार, फॉर्म भर देना, like because the winners of this quiz would be like awarded with swag and etc. and हमारे पास contact info होगा उस फॉर्म में, उससे बिना acknowledge नहीं करेंगे। and it's better कि like you come with your real name, so like it'll be, that's like the common convention. Hi everyone. So while you all are joining the Kahoot, I'm Sakshi. I'm a third year at DTU and I'm the membership coordinator. So while you're joining, I'll just briefly tell you about IEEE. So right now, I hope you all enjoyed the session and you all learned a lot and all your doubts were also cleared. Were they? Can you please tell me if they were or not in the chat? Yeah. Okay. So if you want to learn this subject or even other subjects deeper from the basics and up till the point where you can build projects, then we conduct the SIGs, which are weekly classes, and they are in various domains such as circuit design is there. Then hardware mein there's robotics and IoT, and even in software like DSA, programming, WebD, all these things are there. So if you want to attend these classes, you can join IEEE. You can contact any of the membership coordinators or fill the recruitment form. Can any one of you please put the form in the chat so that the kids can see? Apart from these, the other benefits that IEEE offers you are also there, such as there is intern prep, in which the third years who have already grabbed internships at prestigious companies will guide you on how to grab these internships. They provide you resources, they clear your doubts, clear your topics, and they even conduct quizzes on a regular basis. Apart from that, you also get a email ID, which is at IEEE domain. So it's also very beneficial. You can contact the professors for working under them, or even other, you can contact anyone and it never goes to spam, and it's highlighted that this is an IEEE email ID. And then there are competitions, global competitions and hackathons such as Vihan and IEEE Extreme. And apart from that, there are a lot of parties at IEEE. You can ask your immediate seniors, the second years, or you can ask us. हमारे time पे तो मतलब 6 महीने हमने offline देखे हैं, बहुत parties होती हैं. So yeah, these are all the benefits, and I'll just put the contacts of the membership coordinators in the chat, and you can fill the form. So yeah, thank you everyone. All the best for the quiz. Yeah, I guess we shall begin now. अबे like चल ठीक है, तो all the best everyone. All the best guys.
Majority of you answered it correctly. भैया एंड गेट नहीं था, वो 0001 था. Exactly. हाँ एंड था. एंड था शायद भैया. हाँ वही कह रहे हैं. अबे like can you stop the like I guess मेरे से गलती हुई. I'm so sorry. Like अबे stop the quiz like for just 1 second. Shit. I just noticed that. अब मैंने literally अभी notice करा उसको. I'm so sorry. You want to start it again, or you want to? Yeah, like अबे just give me 1 second. Like stop the quiz and stop the stream. Like just give me 1 second. Ah shit. Sorry guys. सिद्धक एक ही मतलब इसमें क्वेश्चन में दिक्कत है और में भी है, देख लो वो. और नहीं नहीं तो नहीं इसमें like हाँ वो continue कर लो. like one ही क्वेश्चन में दिक्कत होगी mostly. Like I'll हाँ just तो फिर एक उसको सेकंड नलीफाई कर देना. नलीफाई कर वो फिर वो मैं देख उसको लो भाई डिलीट ही मल्ली, कर देता हूँ उसको. वो 1 देख सेकंड लो लगेगा तू, मेरे कर को. लो ठीक है. हाँ जी भैया. अबे like you have the like access, you can remove that question I guess. Yeah, I'll just do it. I'm so sorry guys, like it was my fault, like I didn't check the quiz. कोई बात नहीं. मैं तो आंसर कर था. अबे like if you can do one thing, like एक बार go through all questions. I don't want this to happen again. Like Yeah, I've deleted that question. No worry. नहीं just once 2 सेकंड लगा के like go overall सारे questions. Like mostly तो तेरे questions हैं, so you know. Yeah, the rest of it is fine. I think we have tested it. Like just go through it like. Yeah, it's fine. No need. All right. Like let's start that again. Hello guys, carry on. So yeah, this is the new game pin. I'm sharing the link in the chat. like Kahoot हो रही है guys, तो like तुम्हें like किसी ने अगर ये सेशन अटेंड नहीं भी करा and if you want them to like have the quiz like participate करवाना है, then you can like ask your friends. अपने दोस्तों को भी बुला लो. Yeah, we can wait for 5 minutes. आंसर्स बता देगा क्या? How? Don't expect anything from me. मैंने एक क्वेश्चन ही गलत बना दिया था. like अभी 27 हो रहे हैं, तो like 3 minutes में start करते हैं. If you want your friends to come like just बुला दो. Yes guys, अभी बुला लो, फॉर्म भरवा देना बस. हाँ like वो अटेंडेंस वाला फॉर्म भरवा देना. हाँ
गाइस ये लाइक अगर तुम किसी को प्रॉब्लम हो रही है कहूट ज्वाइन करने में तो अभय ने चैट में लिंक भी डाला हुआ है एंड द पेन इज ऑन स्क्रीन टू. Yeah, I'll share it once again since new people have joined. No? Yeah, Yeah. you can go to kahoot.8 and enter the pin there, or you can enter the quiz through the link Abhay shared. Like try to like open the site on your phone because questions would be on our screen, this presented screen, and only the like colored options would be on your like where you have to answer. Siddharth also joined. Like the Preet also joined. What the hell? What? Yeah, actually, during the SolidWorks Hey, nice, session, someone joined from the presenter's name as well. So yeah. Oh lord. On Kahoot. हाँ. Wow. The guys, मैं नहीं खेल रहा, मेरा फोन खाली है यार. एक मिनट अपना रोल नंबर भी डाल. अरे चलो यार, गीतांश साउंड स्मार्ट. Oh my god, इतना कॉम्प्लीमेंट भैया. यार ब्रो तू इंटरैक्ट कर रहा था यार, मुझे खुशी हो गई अंदर से. लाइक अरे so thank you so much भैया. like 2-3 people were like interacting. Kamal was there, Gitansh and Tarang was there, and like देखता हूँ chat एक और से. Shinchan Roy was there. Yeah. Bhuvan and like Kamal. Yes. Yeah. जो भी like freshers थे, thank you guys. And like हमें एक्सपेक्ट नहीं था इंटरैक्ट करेगा कोई. like oops disconnected आ रहा है, क्या करूं? एक बार यार फिर से ट्राई करा है, होना नहीं चाहिए. like these guys have joined. Net issue होगा maybe. Maybe net issue है, like maybe like एक बार like अगर तुम लिंक से ज्वाइन करा तो पिन डाल के देख, पिन से ज्वाइन करा तो लिंक से ज्वाइन कर देख. like अगर अभी किसी का ज्वाइन होने में प्रॉब्लम है तो अभी बता दो. like यार हम फिर like ऐसे लेट होता रहेगा थोड़ा सा. Yeah, I think we'll begin now at 7:30. एक बार like कंफर्म कर लो. कर लो भाई को. like किसी को प्रॉब्लम हो रही तो बता दो, like then we'll start. Yeah, I hope that because we don't want any time lapse, na, so that all of you are all even ground. Bro, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार. like you can यार भाई net issue ही है. If it's a serious issue, then we'll help. yeah, like होना नहीं what चाहिए. has like बहुत is anyone else getting the issue? like oops disconnected. like I guess he is connected. Naman आ चुका yeah, है. Naman is yeah, Naman is there. like all right, so like I guess we can start now. yeah. I hope I didn't do anything else in other questions. Guys, question इधर आएंगे और तुम्हें मार्क उधर करना है फोन पे हाँ. अपने जिसमें. Wow. How is our luck so? Those who are not attended. जिसने बैड करा ना, मैं एक एक को ना कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है? क्या समझ नहीं आया ना, समझा दो. It was great. So मुझे आइडिया है बैड किसने करा. लाइक इसके कोई पॉइंट्स नहीं थे, जस्ट टू बी क्लियर. अब यहाँ से स्टार्ट है क्विज. ये आंसर सही था. most of you have answered. So Utkarsh is at top with Gitansh. I don't know who Kingo is. DXU is I guess Dilpreet, है ना? ना सही नाम रखा नहीं जाता जैसे. Guys, इस पे तो काफी टाइम दिया था. मोस्टली ने सही किया.
Nice, Gitanj. Varun Verma at second. सुना था यार कहाँ थे ने. This is related to the first part, the analog electronics. देखो यार तुम्हें हिंट भी दे रहे हैं आप. Only 3 of you answered. ओए ये आंसर मैंने सही करा है, ठीक है, जस्ट टू बी. ये तुमने गलत करा समझे. ये सेकंड पार्ट का है. यार ये तो लाइक यार ये ना दिख रहा तुम्हारे को आंसर. आप गलत मत करना प्लीज. जिसने गलत किया वो बैंड मीटिंग. वो मैं पर्सनली कांटेक्ट करके बता. It's 9 people personally contacted. From all top. मैं तो हर क्वेश्चन पे ना मेरे को एंजाइटी हो जा रही है अंदर से कि मैंने इसका आंसर बाय थिंक तो नहीं कर दिया. Eight correct answers. Yes. मैंने जानबूझ के ऑप्शन डाला था सी वो, क्योंकि लोगों को पता होता है वो क्या होता है, बट मतलब उन्हें नाम सुना होता है पर पता नहीं होता क्या होता है. कितांज एट फर्स्ट. Yeah, it's correct. Mostly people ने सुना है. नाइस. Okay. वैभव शर्मा क्लाइंबिंग. Jitan's talk about DXU. Nice. Abhay being proud inside. Abhay being less proud inside. Still Gitansh is on top. Nice. सिंपल से क्वेश्चन है गाइस ये तो. मे बी लाइक टाइम लग सकता है इसमें तो.
Nice. Great. Nice. गीतांश ने तो लीड ही ले ली है। ये सारे क्वेश्चन सही किए। हाँ वैसे तो सेकंड पार्ट का था। ये ध्रुव सर का क्वेश्चन है। अरे एटलीस्ट मेजॉरिटी। हाँ मेजॉरिटी नहीं 50% था आई गेस। गीतांश डूड भाई जिनके गलत हो रहे हैं डोंट वरी सिद्धक विल कांटेक्ट। नहीं यार आई एम नॉट दैट फ्री यार। किसी को बात करनी हो तो यार मेरे को कर देना कांटेक्ट लाइक बट फालतू में करना उसकी। किसी को भी लाइक यू कैन कांटेक्ट अभी और ध्रुव। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था। So you have the results now. गीतांश Third is Hardik Lal. And second is Vaibhav Sharma. First, of course, it's गीतांश। Gitanshu. Oh yeah, Hey, Gitanshu. nice. नाइस वन गीतांश। नाइस भाई। नाइस गीतांश भाई 27 With a special mention to DXU and Taran. I just did one question late and he just could not let me get ahead. Hardik answered only one Bhaiya, actually, I question wanted to ask something. What is हाँ, हाँ, CMOS? CMOS यार Let me explain. हाँ So, अभी बता देगा। like, if you remember, there was also a question that can a combination of MOSFET and its complement be used to perform logic tasks? So that technology is called CMOS. So that is something that is like you studied combination of NMOS and PMOS बेसिकली PMOS हाँ NMOS का कॉम्बिनेशन वो लाइक आगे जाके तुम पढ़ोगे। अच्छा ओके भैया। हाँ ऑल्सो विनर्स जो है यार लाइक वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेना टू कीप अ प्रूफ एंड लाइक सेंड अस और लाइक हाँ आई विल कांटेक्ट यू लाइक प्रणय भैया हैज रिटन इन द चैट। हाँ डीएम इट टू द ग्रुप एडमिन्स लाइक जो एडमिन है ना जो सर्किट रैंक का यू कैन डीएम इट टू या अपने लाइक विन का top the podium, the top three. the podium I guess top 3 yes yeah so I guess that wraps it up that's it from our side. Thank you so much. yeah like किसी को कुछ पूछना है अभी लाइक IEEE के बारे में yes as दीदी mentioned IEEE ज्वाइन करना और सब SIGs के बारे में तो मैं मतलब काफी अच्छी चीजें पता चल रही है। अभी CMOS का पूछा था तो इन्वर्टर वगैरह भी काफी सारी चीजें होती हैं मतलब I hope the winners have taken the screenshots. Yeah, like just DM it to the any of the admins of the group of circuit man. These are the membership coordinators. If you want to like join IEEE, you can contact them. Pranay Bhaiya has like given the WhatsApp. Yeah, I have received one of the texts as well. I guess they're quite excited. Yeah, I guess me yeah, too. I have received one too. Like किसी को like कोई yeah you can send it to any of these numbers. Yeah. No, sorry, these are the membership coordinators. Like Abhigyan Bhaiya, do you want to like add on? और क्या मेरा बैटरी चला गया था बता ना। लाइक थोड़ा आप ज्ञान थोड़ा दे दो सर हमें भी। ज्ञान क्या देना है? Yeah, so like if like since most of you were displaying certain interest in all the softwares, so Abhigyan sir specializes in them. So if there is any like constructive question, not just like the casual ones, because these days I think majority of you are texting the seniors regarding projects, so not that. But
if there is any constructive question as to how to approach towards mastering certain जैसे topics. तुम लोग SIGs एंड बाकी चीजों के बारे में बता दिए ना? हाँ Yes, हमने साक्षी मैम ने भी बताया साक्षी मैम ने बताया। तो मतलब मोस्टली जैसे सर्किट डिजाइन के मतलब टेक वीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम EC एंड इलेक्ट्रिकल EP, तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन एंड ऑल. तो इफ यू जॉइन IEEE you will get to know and explore a bit more of these things. Also जो क्लासेस में होता है उससे काफी आगे हम लोग अप्रोच एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो सही रहेगा इफ यू जॉइन IEEE. ऑल्सो रिगार्डिंग एनी क्वेरीज, तुम्हारे 3 मेंटर्स तुम्हें पता चली गए आज, एंड ग्रुप तो एक्टिव रहेगा ही. Yes, So definitely. you can ping them, and also we are in the group as well, so you can ask questions or any queries you have, you can ask us also. तो कॉलेज में आने के बाद मतलब नेटवर्किंग सीखना, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अच्छा रहा तुम लोग आए इवेंट में, एंड ग्रेटली कंडक्टेड बाय U3. Thank you. थैंक यू भैया. थैंक यू सबको. So I guess we sign off as well. Thank you. Guys, actually I had one question. Yeah. Okay. Okay, तो अभी आपको जैसे हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल में वो था मिड सेम का प्रोजेक्ट, तो I decided to make something which was very out of the box. I was thinking of making a self-organizing drone systems जो होते हैं उनका एक डिजाइन प्रपोजल दे. I guess PID controller. हाँ, एक तरह से बोल सकते हो, बट वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. मतलब उसमें सर्किट डिजाइन भी था, उसमें कोडिंग पार्ट भी था, तो बट सर ने वैसे मना कर दिया क्योंकि सिलेबस के बाहर था. हाँ यार, लाइक गीतांज, लाइक प्रोजेक्ट का आइडिया. If you are interested in drones etc. as well, we also have avionics groups. नहीं, बट आई वांट टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो अगर अच्छा. कोई मुझे गाइडेंस दे सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ये लाइक यार बहुत fun था. MTE में ना क्या होता है, लाइक टीचर्स एक्सपेक्ट यू टू मेक प्रोजेक्ट दैट आर रिलेटेड टू द सिलेबस, बिकॉज दे आर लाइक ऑब्वियसली उनको नंबर लगाने हैं. हाँ, तो लाइक थोड़ा सा लाइक अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स जाओगे तो लाइक इट्स ऑल राइट, बट बिल्कुल ही लाइक जैसे यू सेड कि उसमें कोडिंग वाला पार्ट भी है, बट तुम्हारा सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल है, सो लाइक टीचर वुडंट अंडरस्टैंड द कोडिंग पार्ट ना. नहीं मतलब अगर मुझे रियल लाइफ में प्रोजेक्ट बनाना है आउटसाइड ऑफ द कोर्स, तो फिर मुझे हेल्प मिल सकती है. लाइक ड्रोन वगैरह की. हाँ भैया, मतलब ड्रोन्स में भी आर्डुइनो एंड बाकी चीजें ही हैं, हाँ, सर्किट डिजाइन एंड रोबोटिक्स, तो इजीली हेल्प मिल जाएगा. मतलब जो ग्रुप हमारा है एंड आल्सो जो सीनियर्स है वो काफी हेल्प कर सकते हैं. अच्छा, ओके भैया. आल्सो कल रोबोटिक्स वाला टेकवीक इवेंट है, तो तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें वहां पे भी काफी इन्फो मिल जाएगी, एंड जो वहां के मेंटर्स हैं दे आर आल्सो गुड एट आर्डुइनो एंड स्टफ, तो वहां पे भी हेल्प मिल सकती है. क्योंकि बेसिक में मेरे ख्याल से इसमें रोबोटिक्स एंड और के कॉन्सेप्ट ही आएंगे, तो तुम्हें वहां पे भी काफी कुछ. हाँ, वो तो सर ने वैसे ही मना कर दिया, उन्होंने बोला थोड़ा सिलेबस के अंदर. कोई नहीं, परस्यू करो, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे आइडियाज तुम्हारे. गीतांज तो कौन सी ब्रांच का है? इलेक्ट्रिकल. हाँ, तो वही ना, लाइक थोड़े आर्डुइनो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड वगैरह, थोड़ा उसमें काम लाइक इलेक्ट्रॉनिक साइड थोड़ा ज्यादा आ जाता है, तो वही चक्कर है. अच्छा, ओके. हाँ, परस्यू करना चाहो बिल्कुल परस्यू कर सकते हो. हाँ ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं. वही MT में थोड़ा सा लाइक कंस्ट्रेंट होता है कि लाइक टीचर वही कहते हैं कि लाइक थोड़ा सिलेबस से रिलेटेड बनाओ. लाइक अगर तेरे को और कुछ डाउट है लाइक अभय गुजरू या मुझे लाइक कांटेक्ट कर लियो, हमारा नंबर है ग्रुप में. अच्छा, ठीक है भैया. लाइक आई गेस दैट्स इट, लाइक एंड कर देते हैं. Yeah. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. Thank you guys.